Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host, and we are back with our Wednesday sessions. And the topic for today is the law of opposites, and we are doing in continuation with the last week. So we have done all the major spiritual laws, starting with the 7 spiritual laws as outlined by Deepak Chopra. We did law of being, which is the law of pure potentiality, law of giving and receiving, law of karma, cause and effect, law of least effort, law of intention and desire, then law of dharma, and law of non-attachment. We did that, then law of dharma, and we also did 2 sessions on law of attraction, and now we are completing it with the law of opposites. So we will have a quick recap of what we did in the last week so that all of you can be on the same page. So Amanji, anything you would like to share? What you got from the last session? What we discussed? We share करना चाहेंगे so that somebody else can do the recap. Whatever you remember from the last session. हाँ मैं सर थोड़ा सा भूल रहा हूँ. Okay. Yeah, sorry for that, but No I problem. think my memory is not serving me right here. Okay, no problem. So we started off by understanding what is the law of opposites and how is that applicable in our life, or rather how we are experiencing this law of opposites in our life, right? So what we covered was we are living on this planet Earth, and this is the duality. This is a place for duality, right? So when a soul takes a birth, or an embodied soul lands on the earth, I would say that way. So we are living in the domain of duality. So birth and death, it goes together, right? Dukh or sukh, pain and pleasure. This is how we experience life. So life always comes like a coin with heads and tails. We saw this in the last session. Yes. So life is coming to you as a total package. You can't say I choose only the heads or I choose only the tails. But how we live our life? We live our life like we only want the good things in life. We don't want the bad things. So we are looking forward for the good, or rather we are intending and latching on to the good part of the life, and we are pushing away the bad aspect of life, which we normally do, right? Pain and pleasure. So we are running towards the pleasure and we are running away from the pain. And that is the cause of, all the wise men have said, that is the cause of all suffering and misery in life. Yes. So this is also termed in our scriptures as raga dvesh. So attraction and aversion, both are forms of very strong attachments. Yes, and that is the cause of suffering and misery on this planet Earth or in our life. So most of the people, rather 99% of the people, are completely, you can say, enveloped in this matrix or Maya. And result is suffering and misery in life. So whenever there is a suffering and misery in life, look at the reason. If you analyze it, you will find duality is the reason. Because we are not able to understand the duality and we get attracted towards the so-called sukh, and we run away from the so-called fear. So pushing the dukha away and jumping and trying to catch hold of the sukh in life. So that is in short that we saw in the last session. Yes. And we did many examples, we did many discussions we had. And that was in short what we discussed. So life is full of duality, and when we talk of non-duality, that is at the you can say the absolute level. The absolute level, there is absolutely non-duality. But where we are living in this body, mind, and soul combination, there we as a soul experience duality, and that is the only way to experience life. If there is no light, there won't be any darkness. We don't experience it. So anything we have to experience, we experience it in duality. That is in short what the law of opposites say. Now I'll throw the discussion open. Anybody who has anything to share or ask, you can do that. And we can look into your life. We have to look into your life and see where this law of opposites is applicable in our life.
And if there is any kind of suffering or misery in your life or in our life, we look for the duality. We look for the duality which we are unable to see. When I say see with wisdom. Because the wise people simply look at the duality and cross the matrix. तो जो दुख और सुख में सम रहे, जो द्वंद्वों में ना पड़े, ये शास्त्रों की भाषा है, he is the one who is free. So if I have very strong liking for somebody or something, and I have very strong dislike for something, both are bondages. And the person who is free is ना उसको इच्छा है, ना उसको अनिच्छा है. दोनों ही बंधन से वो मुक्त है, वो असल में मुक्त है. He is called the Jivan Mukta. So that is in short what we discussed in the last session. So anybody who wants to add or ask anything, please go ahead. So Amanji and Jyoti ji, I think that's all we covered. Anything that you can remember now, if you want to share, please go ahead. So yes, Amit, go ahead. Yeah, I have a question now, certainly. So when we talk about law of opposites, is the quantity, if I talk about very quantity, has to be also same, or so for example, the amount of dukkha or amount of sukha, whatever has to be experienced at a particular point of time in life, let's say for a spread of 1 year or 5 years or forever. So does it matter that how much is the quantity, or because we see sometimes cases where somebody's life is full of dukh, hardly any sukh. If we talk about the current life, I mean, in the past life, maybe you would have gone through a compensatory reward for this. So yeah, in somebody's life is always very happy, and we can see he's in sukh, and he can also see that he's always in sukh. So Okay. I don't know. So sometimes yes, dukh hota hoga sukhi insan ko bhi, and vice versa. But sometimes the quantity बहुत ज़्यादा vary करती हुई देखी गई है. So I don't know how do we see this? I will not say in terms of quality or quantity it will be same, because it depends entirely upon the past karmas, right? Yeah, So that's what I said. If we talk about only this life, then it looks like किसी की life बहुत सुख में है. नहीं, But इसी he लाइफ also- में भी अगर आप देख लो, इस लाइफ में भी अगर आप देख लो, तो भी it depends on your karma, because in this life also you have done major karmas, right? बचपन से अभी तक जैसे भी आपकी कंडीशनिंग हुई है ना? अब कोई विक्टिम ईगो में है और वो उसको बहुत बार मौका मिला विक्टिम ईगो छोड़ने का, पर वो विक्टिम ईगो नहीं छोड़ रहा है, वो उसी में है, तो सफरिंग एंड मिजरी में रहेगा वो, क्योंकि वो अज्ञान में है. अज्ञान से अहंकार आता है, राइट? अहंकार क्यों है? अज्ञान से. If you see the whole construct of how the ego is made, and because of the ego he is unfulfilled, करेक्ट? वो पूर्ण नहीं है. क्यों? क्योंकि अहंकार कभी भी पूर्ण नहीं होता. तो अगर वो अहंकार से ऑपरेट कर रहा है, ईगो से ऑपरेट कर रहा है, he will never feel complete, he will never feel whole. और वो क्या उम्मीद रखता है कि इस जग में कुछ है, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, जिससे मैं पाके पूर्ण हो जाऊंगा. That is how the ego operates, right? So ego is always trying to collect things and people and possessions so that somewhere the ego gets fulfilled. वो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो अंदर से अपूर्ण है उसको जगत की कोई भी चीज मिल जाए वो पूर्ण नहीं हो सकता. Correct. दैट इज वाई कामना की पूर्ति करने से कामना और बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है अच्छा इससे नहीं मिला तो इससे और बड़ा लेना पड़ेगा तब वो पूर्ण होगा. तो ही इज ऑलवेज ऑन द हंट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, इसको परिग्रह बोलते हैं, राइट? और जिसको ऑपोजिट आप परिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, which we learn in the Yoga Sutras, correct? So ego is always unfulfilled, incomplete, and tries to accumulate things from the outside world so that it can become complete. That is the whole process of how the duality works. Now he is looking only for sukh, and he is trying to push away the dukh, and that is the cause. That is exactly the reason for bondage. That is exactly the reason for the suffering, क्योंकि he doesn't want dukh, and what he doesn't want he will automatically attract it, क्योंकि जो वो resist करेगा वो persist करेगा. This is also a universal law. What you resist will persist, correct? So if I say I don't want anybody to shout at me, there will be hundreds of people who will come and shout at me, क्योंकि मैं उसको resist कर रहा हूँ. I don't want a violent boss or a somebody who is a cruel boss, and I will always find a cruel boss.
जिसको मैं पुश कर रहा हूँ वो ज़्यादा आएगा लाइफ में। तो जो दुःख से भागने की कोशिश कर रहा है उसको दुःख ज़्यादा मिलेगा। यूनिवर्सल लॉ को अगर हम समझ जाएँ तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है, दुःख है, ठीक है, सुख है, ठीक है, अब अपने कर्मों के हिसाब से उसको मिलेगा। ही विल नॉट create more suffering by that event, right? Now coming back to answer your question basically is quantity is not the criteria. आपके कार्मिक अकाउंट कैसे हैं और आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स कैसे हैं, that will decide how long you're going to suffer. And at the right time, the moment the awakening happens, you're free. You are always free, by the way. चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आप फ्री ही हो, पर वो एक्सपीरियंस में नहीं आता है, और वो तब आएगा when there will be a moment of awakening. Then the suffering will stop and the ego will take a back seat and he will start moving forward on the spiritual journey, he or she. Yes, Swamiji, to answer your question in straight away, point to point, quantity is not the criteria. Your karmic account and karmic imprints are the criteria. And your spiritual journey, कितनी अच्छी साधना आप करते हो, कितनी आप में पात्रता है आध्यात्मिक ज्ञान को लेने की, आध्यात्मिक ज्ञान को एक्सेप्ट करने की कितनी पात्रता है, that is important, right? Even in Bhagavad Gita, Lord Krishna has said, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, ज्ञान भी उसी को मिलता है जो उसका पात्र हो, जिसमें श्रद्धा हो, राइट? तो पात्रता जरूरी है ज्ञान के लिए। तो जिस दिन ज्ञान मिल जाएगा, ही विल बी फ्री, राइट? नॉन डुअलिटी इज एन इल्यूजन, एक्चुअल ट्रुथ तो, सॉरी, डुअलिटी इज एन इल्यूजन, नॉन डुअलिटी इज द ओनली ट्रुथ. बट हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट एंड रिसीव दैट विजडम? बताने से नहीं आता, वो अंदर से आना चाहिए, राइट? Swami ji, is that okay, or you have a follow-up question? I think मैंने क्वेश्चन पूछा पर वो आंसर मुझे पता ही था शायद. आई थिंक वो सिंपली मुझे ये दिखता है कि this lifespan of let's say 30 years or 50 or 80 or whatever is a very short duration to measure. Correct. Ultimately वो past life से ही connect करना पड़ेगा कि इस लाइफ में उसने सुख झेला या दुख झेला, largely या less. So I think मेरे हिसाब से तो quantity matter करता है. But I will not, मतलब we can talk some other time, but सारी quantity का ही तो खेल है. Throughout the life, let's say 80 years में किसी ने 80% टाइम दुख झेला, it is a quantifiable thought. So I think Okay. quantity matters. Yeah. So, but I got the answer. Matlab, thank you. Yeah, you can say it depends, but see, it's a question like, अगर कोई 100 साल से अंधेरे में जी रहा है, उसको लाइट जलाने के लिए अगले 100 साल नहीं चाहिए होंगे ना. जिस दिन माचिस जल जाएगी तो अगला मतलब लाइट आ जाएगी. सो इग्नोरेंस को भगाने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो स्प्लिट सेकंड में आ जाएगा, बट व्हेन दैट मोमेंट विल कम, इट विल टेक सम प्रिपरेशन फॉर दैट. So I'm not talking about how much he is going to suffer. I'm saying when will the awakening happen? That depends on your spiritual growth, है ना. और उसके लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए. Then you will be able to get that wisdom. That's all. कितने सालों से, कितने जन्मों से वो परेशान हो रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. वो कब जागना चाहता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. मेरे सवाल का भाव कुछ और था कि ये जो हम लॉ ऑफ ऑपोजिट्स की बातें करते हैं तो उसमें क्वांटिटी मैटर्स और नॉट. See, you can say the quantum might be important, but it is not exact. Equal and opposite reaction उस perspective से, क्योंकि जो नहीं, it is not that way. It is not that way. Okay. जितना सुख आएगा उतना दुख आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. अपने कर्मों के हिसाब से उसको सुख अलग मिलेगा, दुख अलग मिलेगा. See, the positive karma will not neutralize the negative karma. That is for sure. अगर आपने नेगेटिव कर्म किया है उसका फल अलग मिलेगा, पॉजिटिव कर्म किया है उसका फल अलग मिलेगा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डुअलिटी इन दिस वर्ल्ड. करेक्ट? Yeah. Sure. That is important. Sure. Welcome. Let's acknowledge Amit ji. Yes, welcome Leslie. I think Krishan ji has a question. Who has a question? Aman ji. Krishan. Krishan. Yeah, go ahead. या शशि सर, एक्चुअली अभी कॉल में घर से अटेंड कर रहा हूँ, तो बेटी है मेरे पास में. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, जैसे अभी आपने ईगो की बात करी ना, कई बार होता है हम लोग बहुत, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ईगो की बात करी ना, तो हम बहुत जब लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं यार, ईगो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है. और टॉप ऑफ आवर इमोशंस
we deal with them on a very in a generosity, है ना, बहुत ही उनके वो जो बेवकूफ़ी है उनको अवॉइड करके हम उनके साथ पेश आते हैं. बट अप टू सर्टेन पॉइंट होता है क्या है कि ना, वो सामने वाला बंदा, जो कहावत है ना कि ज़्यादा किसी से झुक के मिलो तो पीठ को पायदान समझ लेते हैं. देन दैट स्टार्ट हैपनिंग, राइट. तो वहाँ पे व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या नाम जो है वो उस ईगो को कैसे मैनेज किया, क्योंकि वो ईगो नहीं, फिर दैट बिकम योर सेल्फ रिस्पेक्ट. Respect. I get that. वो उस पे कैसे आप सजेस्ट करेंगे? Yes. So first of all, a very good question, Krishnan ji. So let's acknowledge Krishna ji for that. Now, the only thing that we have to understand is when any person is operating through the ego, first of all, what we do is we are looking at the ego always is operating in pairs. So we are always looking at the other person for him to be judged or blamed, correct? That he is responsible for it. Now the question arises is when somebody is in the impact of say victim ego, ठीक है, कोई victim ego में है, I am small, I am weak, I am I'm a failure, I'm a loser. You get the affirmations that he's having in his mind, right? So if somebody is operating from a victim ego, he will experience being a victim only when there is a villain in his life, right? So a victim ego will always attract a villain. फिर वो चाहे मीना कुमारी हो या फिर वो देवदास हो, समझ रहे हैं, या वो मीना कुमारी की तरह रोने वाली कोई कैरेक्टर हो, या फिर वो देवदास जैसा हो कोई कि उसको हमेशा रिजेक्शन और फेलियर ही मिलेगा. Get my point? So there is a partner who is going to let him experience that, right? तो ईगो, अगर विक्टिम ईगो है तो विलेन को आना ही होगा. अब उसमें करना क्या है? फर्स्ट द पर्सन हैज टू गेट awakened to his original you can say realization कि जो वो सोच रहा है वो सब गलत है. लाइफ का ऑपरेशन ही गलत है. Because what he believes is not the universal truth. What is the universal truth? Universal truth is that I am a soul fully empowered and fully powerful and free in the image of God. Yes, but I am not experiencing that. Why? Because the victim ego has actually hijacked my life. तो हमको victim ego से free होने के लिए पूरी की पूरी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे वो ईगो से फ्री होगा वैसे वैसे लाइफ की सिचुएशंस चेंज होंगी. Now coming back, if you want a direct answer to it, yes, self-respect is important, and in a relationship you have to first understand that self-respect, freedom, and space is important. ठीक है, and that is why nowadays we are talking of self-love. कि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है that you are not actually depending on the other person for the mental emotional well-being. आप अपने आप में सक्षम हैं, पूर्ण हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है for their approval and appreciation to make you feel loved. So practicing self-love is one option how you can get out of that ego of the maybe victim ego or any form of ego. Complaining ego है, defensive ego है, बहुत ego है, superiority inferiority complex भी है. Yes, which is a very common form of ego. And there is something very interesting that you can understand about duality. Suppose a person is operating from superiority complex. अब किसी वजह से होगा, या पैसा है या रूप, very smart, very handsome, so he is having a superiority complex, or he is very wealthy, so he is having a superiority complex. अब जिस फैक्टर की वजह से उसको superiority complex है, उसी फैक्टर की वजह से उसे inferiority complex भी होगा. So inherent in the superiority complex of maybe wealth, तो अगर उससे कोई कम पैसे वाला उसको मिलेगा, वो उसको डोमिनेट करेगा और उसको superiority complex हो जाएगा. वो ही फैक्टर एप्लीकेबल होगा when he meets somebody who is 10 times more wealthy than him. Suddenly he will be like shaking in his legs. क्यों? क्योंकि जिस फैक्टर से वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है उसी फैक्टर से वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील करेगा. राइट? If I am very smart and handsome and if I have superiority complex because of that, and when I see somebody who is not as smart as me, मैं उसको डोमिनेट करूंगा. और उसी समय मेरे सामने अगर शाहरुख खान आ गया तो क्या होगा, या ऋतिक रोशन आ गया तो क्या होगा? I will be shaking. So the same factor will result in both. Get my point? ये भी duality का ही एक एस्पेक्ट है कि नहीं? Yeah, making sense? So
Krishan ji, is that clear or you have a follow-up question? Yeah, you are on mute. No, actually, I have voluntary muted, by my own muted to myself. My daughter is sitting, along to me. That's fine. So that's why, yeah, sorted. Okay, got it. Perfect. Let's acknowledge Krishan ji. And yes, Leslie, anything you want to share, you're welcome to do that. Devesh ji, Aman ji, anything you want to add before we move on to a further depth of it? Yes. And I'm sure Amit ji has something to share on that. Yeah. So Amit, please feel free to do that whenever you feel comfortable. And meanwhile, since you're on the discussion, I will just give you some small, you can say, another in-depth value which I got. This was recently when I was reading some notes, and this thought came up. कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को एक तरीके के इंसान बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट कंडीशनिंग व्हाटएवर, एक तरीके के इंसान बन गए, उसके बाद अवेकनिंग होती है एंड देन वी recreate ourselves. So the process of recreation is always coming after the destruction. Yes or no? क्या बात, beautiful. पहले जो क्रिएट किया वो अच्छा नहीं लगा तो वो डिस्ट्रॉय किया एंड देन वी क्रिएट अगेन. So this is actually called destructive creation, you can say, or creative destruction, you can say, whichever way you want. No, whichever way you want to understand it is okay. But again, it is duality, right or no? Creation and destruction are opposites, so it seems. But actually, that is the process of recreation. Yeah. Right? So consider this. जब भी awakening होएगी, spiritual journey पे आप हो, साधना कर रहे हो, and आपकी जब भी awakening होगी, you will first destroy whichever way or whatever way you have created yourself, because you see that is not the truth. Now when you are following the truth, you will first destroy the unreal part, or which is an illusion, and then based on the truth that you are following, जो सत्य और धर्म के मार्ग पे आप हो, you will reconstruct yourself, right? So consider that creation and destruction again is not opposite. It is part of the same game called life. Destroy, create, destroy, recreate. Yeah. Right? Yes. And that brings us to the concept of Shiva and Shakti. Yes, you can say yin and yang. And I'm sure Amit ji would have something to add on it. Yes, Amit, over to you. Thank you. You said it all. So, law of opposite. So, Shashi sir से बात कर रहा था मैं कि it's a very it's an understanding which is very close to my own journey of soul, and this understanding of law of opposites, I think, was one of the biggest first transformer in my spiritual journey. So yes, Hindu mythology system में इसको शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है. चाइनीज में यिन यांग बोलते हैं, और हम श्योर कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग नामों से लोग जानते रहे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मेरी एक जो अंडरस्टैंडिंग करीब आई थिंक अबाउट 3 years back, it hit me so hardly and life changed for good. So I was sitting in a meditation, and then maybe some kind of a download happened, and very ट्रांजैक्शनल विजुअल के मेरे सामने, और मेरे को ऐसे लगा कि ये क्लैरिटी आई कि दिस इंटायर यूनिवर्स जो है वो 2 अलग अलग शक्तियों से मिलके बना है. ये मैंने उससे पहले शायद कहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने इस तरह से पढ़ा था, जिस तरह से मैंने देखा कि दिस यूनिवर्स इज ड्रिवन बाय 2 ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच नीड ईच अदर टू कोएग्जिस्ट. सो बट दे नीड ईच अदर टू कोएग्जिस्ट. जिसका एग्जांपल अभी सर ले चुके 2 बार, जिसमें जैसे एग्जांपल था ये, उस समय जो दिखाई दिया कि लाइट का ऑपोजिट है शेडो, बट लाइट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस विदाउट शेडो, एंड शेडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट लाइट. Likewise, silence and sound, all that came up. And then what opened up, I mean, how did I start to relate this understanding to my life? तो ये हुआ कि जब हमारे थॉट का जब भी कोई जन्म होता है, whenever we think or we land up creating a thought, उसी क्षण एक ऐसे थॉट का भी जन्म हो जाता है जो उसके विपरीत दिशा का होता है. तो anybody who thinks in the opposite way, who thinks that a particular activity is okay to do, तो मैं बोलता हूँ कि हर एक उल्टी दिशा का इंसान या उल्टी दिशा की सोच जो हमें उल्टी लगती है, वो उसी समय कबूल हो जाती है ये सोच के कि इट इज ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ डिवाइन. तो जो हमें एंगर या हेटेड होता है किसी
एक ऑपोजिट क्रिएशन या इंसान या थॉट से, जिसमें हम आग बबूला होते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू इट। तो वो जो इसमें जो हेट्रेड है, हेट्रेड का भाव, वो एक सेकंड में बुझ जाता है, ये मान के कि अगर हम इस डिवाइन प्रिंसिपल को बिलीव कर रहे हैं, तो वही डिवाइन प्रिंसिपल ये भी कह रहा है कि इसका ऑपोजिट का भी जन्म हाथ के हाथ हो गया था। सो हेट्रेड छोड़नी है और ये देखना है कि अब नाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिट चीज अच्छी है, जैसे हिंसा और अहिंसा फॉर एग्जाम्पल। अब एज अ सेन स्पिरिचुअल पर्सन हम ये भी देख सकते हैं कि मेरे को तो लगता है अहिंसा और नॉन वायलेंस इज द राइट वे टू लिव, बट देयर इज अदर पार्टी, अदर पर्सन हु थिंक्स वायलेंस इज द राइट वे टू लिव। नाउ ईदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ड्रॉपिंग द हेट्रेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि ये कैसे अहिंसा कैसे कर सकते, पहले अपना क्रोध शांत हो जाता है, फिर देन वी थिंक कि अच्छा ना क्या ये मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज है जो मुझे एड्रेस करना है, क्या मुझे किसी तरह के रिफॉर्म में उतरना है, क्या मुझे लोगों को ठीक करना है, ये बात समझानी है नहीं, या फिर टेक अनदर रूट ऑफ लाइफ विच कुड बी व्हाटएवर। सो एटलीस्ट हेटरेड छोड़ के wisely deciding that either if we take creative action to counter it with a lot of wisdom, piousness, and calmness, or maybe have find some other purpose, or if there is some other challenge which comes in our way. तो ये एक ऐसा कुछ खुल के आया उसके बाद, that it completely changed the way I perhaps, और एक दो चीजों को इस, अब क्या होता है, ये बात हमें सबको पता है, I think all of us knew all of this. What I did, थोड़ा सा मेरी जर्नी में ये भी दिख रहा था कि जितने क्रिएटिव विजुअल्स हैं आसपास होने चाहिए, तो मैंने एज ए रिमाइंडर एक यिन एंड यांग, जो एक गोल्ड सिंबल होता है यिन एंड यांग का, वो गुड इन द बैड, बैड इन द गुड, ब्लैक एंड व्हाइट फिश का जो होता है। सो मैंने उसका एक कार डैंगलर खरीदा और उसको कार के रियर व्यू, सॉरी फ्रंट रियर व्यू मिरर पे टांग लिया। एंड आई वाज सीइंग इट थ्रू आउट, व्हेन आई वाज ड्राइविंग द कार, मुझे लगता है यिन एंड यांग मैंने क्यों टांगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट वाज रिमाइंडिंग मी एवरी सेकंड यिन एंड यांग, ऑपोजिट लोग होते हैं, सारे गधे के बच्चे होते हैं, उनको माफ करते चलना है, उनको नहीं पता है। तो इस तरह की फीलिंग्स, और कार यूजली होता है क्या, रोड पे हम बड़े सबसे ज्यादा इरिटेट होते थे, मतलब इन माय केस, ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रही है, ये इंडिकेटर नहीं दे सकते, इनको पता नहीं है, नो। सो एंड दिस डैंगलर वाज ऑलवेज रिमाइंडिंग मी कि ऐसे गधे के बच्चों के होने की बहुत जरूरत है अगर मैं नॉन गधे का बच्चा हूँ तो। सो दिस रिमाइंडर एंड मेनी such reminders can help to remind us about any spiritual wisdom that we know, either through our own learnings or these sessions or such kind of discussions. तो मैंने एक और टॉपिक इसमें ऐड कर दिया कि रिमाइंडर के लिए एक विजुअल बहुत सारे मिलते हैं wherever you want to. But coming back to this subject, law of opposite changed my life, yin and yang, Shiva Shakti, Ida Pingla. So that's pretty much my sharing. Wonderful, wonderful, Amiji. That's wonderful sharing and very powerful personal life. Very good. And just to continue the discussion on this Shiva Shakti concept, yes, you can always consider this Shiva. We always know as the ultimate stillness. शिव जी को आपने हमेशा देखा है meditative pose में, stillness में, and Shakti is all about movement, right? So it is all about a combination of stillness and movement, and that is what is life. Correct? Yes, Amiji, you want to share something? हाँ, मैं एक point I think I missed out on. I can lower my hand. So this also helps us a lot in understanding Shiva Shakti, or let's say even a marital dimension. So when we know that we all are made of two different ingredients, which is Shiva and Shakti, some people call it divine masculine and divine feminine. We all have both of these elements, and these are opposites to each other. For example, लॉजिकल होना एक शिवा का गुण है या डिवाइन मैस्कुलिन का गुण है, और इमोशन का उल्टा है, सॉरी लॉजिकल का उल्टा है इमोशनल। इमोशनल होना एक डिवाइन फेमिनिन का ट्रेट है, शक्ति का ट्रेट है। तो एक बहुत अच्छी एक एनोलॉजी क्रिएट होती है और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जब लॉ ऑफ ऑपोजिट समझ जाते हैं, तो वो एनोलॉजी हम अपने मैरिटल रिलेशनशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेंटली। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड the original software driven reaction of the opposite gender, कि वो इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करेगा या करेगी, और उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हेटरेड नहीं करनी, अब समझना है एज अ वाइज लीडर कि कैसे मैनेज करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमित जी, लेट्स एक्नॉलेज अमित जी। So he has given complete blueprint of acceptance of life. हाँ, जहाँ पे लाइफ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे अगर आप ये लॉ ऑफ ऑपोजिट्स लगाएंगे तो acceptance becomes very easy and natural. So it is a natural way of living then.
एंड ऑब्वियसली जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा, राग द्वेष से आप मुक्त हो गए, तो आप में बहुत समता आ जाएगी, इक्वानिमिटी आ जाएगी. तो दैट इज the importance of this law of opposites. Very well explained by Amit ji. So let's acknowledge Amit ji. Very good. Great. Now again coming back to the basic concepts of Shiva and Shakti. So we all know, like Amit ji said, Shiva divine masculine and Shakti divine feminine. But what we are actually looking forward to is, every man is looking forward to a woman, thinking that he is a divine masculine and some divine feminine will come and complete him. And it's true the other way also. What we have to really understand, this divine masculine, divine feminine are part of the same jiva or the same human being who is me. मेरे अंदर दोनों हैं, शिवा और शक्ति. जब वो बैलेंस में आ जाएंगे, I will be पूर्ण. Right? So in your sadhana, in your spiritual journey, what are we looking at? We are actually looking to the journey of being complete, whole, complete and perfect, right? And any soul who contributes to this, it could be a partner, it could be a wife, it could be your friend, it could be anybody, right? उनका हाथ पकड़ के अगर आप डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, तो दैट इज द सोल पार्टनर फॉर यू, आई वुड से. अब ये कोई भी हो सकता है, हाँ. तो देयर हैव बीन मेनी गुरुज and Shishya who have been actually acting like, the invoking the divine within. तो जो भी आपके अंदर, अगर आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन है, तो डिवाइन फेमिनिन की जो पार्ट है, जो शक्ति को इन्वोक करना है, दैट विल मेक अस कंप्लीट. और अगर डिवाइन फेमिनिन है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को इन्वोक कर देने से वी बिकम कंप्लीट. तो ये, इसको जेंडर से ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. एवरी सोल is a combination of Shiva and Shakti, and our spiritual journey is only to make us whole and complete. But yes, you can have a partner who can help you move in that journey, where both of you share your completeness with each other. That is the purpose of a spiritual journey. Correct? Right. So we have been giving a lot of gyan, and welcome Vijay ji. Anybody who wants to share anything that is opening up, please feel free to do that. So Krishan ji, Aman ji, Devesh, Anita Gupta ji, okay, and Lavita ji, welcome. You can switch on your videos if you're comfortable, and if you want to share something, please go ahead. Yes, who would like to share? We are taking the discussion from the last week to a different level of discussion, and we have added a few things. So anybody who wants to share, please go ahead. Yes, Leslie, you want to share something? हाँ, एक सेकंड ज्योति जी आ रहे हैं. Leslie, please go ahead. Jyoti ji can continue. Okay, Jyoti then I can. Yeah, Jyoti ji, go ahead. Okay, I just want to add one thing. That was कि पहले destruction होता है, फिर construction होता है. तो that is a beautiful thing, क्योंकि जिस दिन दुख को सहा नहीं, वो सुख को understand नहीं कर सकता. Right. बिल्कुल सही. इसीलिए हम बोलते हैं कि that much only. हाँ, अच्छा, that's fine. Wonderful, Jyoti ji. Let's acknowledge that. So that's a good insight. And this is what we had discussed in the last session also, कि पहले दुख निवारण होगा, उसके बाद आनंद प्राप्ति होगी, है ना. तो first we have to first destroy the cause and the effect of the suffering and misery. जब वो complete हो जाएगा, then we create what? The bliss. So again, it is the same process of creation, destruction and recreation. Yes, very good, Jyoti ji. Let's acknowledge. Thank you. Yes, Devesh ji, आप कुछ बोल रहे थे, और Leslie, who wants to share? Please go ahead. Yeah, Leslie. What Jyoti ji said, and what the law of opposites का जो part है, is she said कि भाई सुख तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक दुख ना हो, या दुख तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक सुख ना हो. So basically हम लोग को जो सिखाया जाता है, वो सिखाया यही जाता है, in the life को इसी तरीके से सिखाया जाता है, in the form of opposites. And whereas if you, I mean, as per me, there are no opposites. It's one flow. It's only one flow. But because सीखने के लिए conceptually हमारे को ये दुख और सुख create करा, because देखा जाए तो they cannot exist without each other. I mean, like वो दोनों ही जुड़े हुए हैं. So और उसको जैसे आपने अभी वो
लेडी आई मीन वुमन इन आदमी का पार्ट बोला, जेंडर वाला पार्ट बोला, वो सिर्फ लाइफ का एक फॉर्म है जस्ट टू काइंड ऑफ क्रिएट, बट अंडर करंट तो एक ही चीज है, एक ही जीव है, एक ही सोल कह लो, आत्मा कह लो, वॉट एवर इट इज, देयर इज ओनली वन थिंग. सो बेसिकली उसको दो तरीके से देखना कि वो ऑपोजिट्स है. वो ऑपोजिट्स मुझे नहीं दिखते, मुझे एक स्ट्रीमलाइन लगने लगती है, बस इट जस्ट कीप्स चेंजिंग इट्स वेव्स, नथिंग एल्स. और हमारी इंटरप्रिटेशंस चेंज होती रहती है उसके प्रति. जैसे कि एक के लिए सुख होगा तो वही चीज दूसरे के लिए दुख होगा. Absolutely. So I mean, therefore I personally feel it's just a way conceptually looking at it. That's it. Okay. Okay, got it, Leslie. But what you're saying is more or less what we have discussed in the last session also, when I said that the life is like a coin. It has both heads and tails. What you're looking at may be heads, but then the tail is on the other side. You just go through it or look through it, you will see the tails. है ना? तो लाइफ को एक हमको जब चूज करते हैं, we have to choose life completely. I can't say I choose only the good in life or I choose only the bad in life. Experiences will be good and bad, and it will come as it is coming to you as a duality, because that is the only way we experience life. Life में concept की बात नहीं है, ये experience ही ऐसे होता है. जो भी इवेंट एक्सपीरियंस होगा, आप उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस या तो कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, है ना? तो इनहेरेंट इन एन इवेंट इज द सीड ऑफ द, लाइक इनहेरेंट इन एन इवेंट विच यू लेबल एज सुख, उसी में बीज है दुख का, है ना? जैसे जीवन आता है, कोई जन्म लेता है तो सुख की बात होती है, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन जैसे उसको ऑपोजिट क्या है, एज सून एज समबडी डाइज वी आर मोर्निंग. उस मरण, जीवन और मरण भी ऑपोजिट सी हैं मानते, पर वो पार्ट ऑफ लाइफ है, इट कम्स एज ए पैकेज. इट्स द सेम लाइफ, लाइफ के ऑपोजिट हैं, लाइफ के दो फैसेट्स हैं, राइट? उसी तरीके से सुख, अगर कोई भी इवेंट ले लो आप जो आपको सुख दे रहा है, अगर आते वक्त सुख दे रहा है तो जाते वक्त दुख देगा, है कि नहीं? बीमारी आई है, दुख हो गया. एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, टांग इंजर्ड हो गई, दुख हो रहा है. जब ठीक हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे. जॉब मिल गई, खुशी, पार्टी, हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, खुशी हो रही है, पार्टी हो रही है. जब वो जॉब चली जाएगी, टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा, तो क्या होगा? दुख होगा. तो कोई भी लाइफ का इवेंट अगर वो आते वक्त खुशी दे रहा है तो जाते वक्त दुख देगा, और अगर आते वक्त दुख दे रहा है तो जाते वक्त सुख देगा. दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो इसीलिए मैं बोल रहा था, दिस डिपेंड्स एंटायरली ऑन हाउ फास्ट यू कैन डेवलप दैट विजडम टू सी थ्रू बोथ ऑफ दिस एंड बी एब्सोल्युटली बैलेंस्ड. तो चाहे सुख आए ठीक है, दुख आए ठीक है, नाउ यू आर फ्री. क्योंकि ना इच्छा है ना अनिच्छा है, ना ग्रहण है ना त्याग है. Then I am free. I hope everybody is getting it. We discussed this. We discussed this in the last session also, right? तो अगर मेरे को बहुत इच्छा है किसी चीज की और किसी चीज के लिए बहुत अनिच्छा है, मैं बॉन्डेज में हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ. या तो दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट. तो अगर लाइफ में सफरिंग है, मिजरी है, दुख है, सी कहाँ पे डुअलिटी आप पे हावी हो चुका है और आपको पता भी नहीं है. अगर वो डिस्टिंग्विश कर लिया, you will have get an access to become free from your sufferings and misery and the so-called dukha. क्योंकि दुख निवारण होगा तभी आनंद प्राप्ति होगी. This is the methodology which has been taught in the scriptures, even in Vedanta, even in the Buddhism. Yes, right. So let's acknowledge everybody who shared. Right. Who else? Vijay ji, Devesh ji, Anita Gupta ji. Anything you want to share? I don't think you have come here before. If you want to introduce yourself, please go ahead. किसी के कोई सवाल? Anything you want to share or ask? Please go ahead. सर मेरा एक सवाल है, अमन दिस साइड. हाँ जी, हाँ जी. लॉ ऑफ अपोजिट्स, सो इसका मतलब यह है कि अगर कोई लॉ ऑफ अपोजिट्स को अच्छी तरह से मैनूवर करके और उसको कंट्रोल करता है, तो दैट इज द रोड टू द इटर्नल हैप्पीनेस, और रादर आई वुड से इटर्नल control over himself and the mind and all that what we see worldly. Yes, this is the path, because when you see duality as duality, then you know you are in the matrix, and that will show you the window or the space through which you can break away from the matrix.
है ना। तो नॉन डुअलिटी को पार करके नॉन डुअलिटी की तरफ आप बढ़ोगे, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल साधना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, if you can see what is giving you dukh and what is giving you sukh, and you can be stable in that, आप देख रहे हो कि ये ना सुख जो आप दे रहा है ये इवेंट भी चला जाएगा, दिस टू विल पास, और अगर सुख आ रहा है दिस टू विल पास, अगर उस कॉन्टेक्स्ट से आप सिर्फ देखो, जस्ट लुक एट इट विद विजडम, you are free, then you are not in bondage. See, the ultimate thing is that we have to be free from bondages, right? And the fact is that we are already free, but we don't experience it. तो इसलिए बोलते हैं कि अज्ञानी बंधन में है, ज्ञानी बिल्कुल फ्री है, ज्ञानी अब एकदम मोक्ष मुक्त है, या जीवन मुक्त है। हाँ, सुना है ना आपने ये, उसको क्यों बोलते हैं Yeah, ऐसे? क्योंकि correct. ज्ञानी सुख और दुख के भ्रम को देख लेता है, वो देख लेता है ये भी अस्थाई है, वो भी अस्थाई है, नथिंग इज परमानेंट, एंड दिस इज जस्ट लाइक ए वेव कमिंग अप एंड गोइंग डाउन। इसमें कुछ पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो, ये प्रारब्ध है मेरे, आ रहे हैं, शरीर और मन इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको अनुभव करेंगे, आई एम फ्री, whatever has to happen will be taken care by the body and mind, I am free. When you get that wisdom, then you are free. So Aman, is that okay, or you have a हाँ follow-up नहीं सर, question? वो नहीं बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं बस वही समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो हम हिंदी का वर्ड यूज करते हैं तटस्थ, तो तटस्थ में वही होता है कि आप साक्षी, सुख दुख में एक समान है यस। और आप किसी भी चीज से बिल्कुल पहले साक्षी बन के आप इम्पैक्ट देखोगे, नहीं होते। पहले साक्षी बन के आप देखोगे, तटस्थ होके देखोगे, तब आप में समता आएगी, इक्वानिमिटी आएगी। That will further, with more practice, lead you to Siddh Pragya, where you are steady in the divine wisdom. Yes, when you can look at your emotions. See, emotions you have to understand. Emotions are very, very powerful. Thoughts और emotions. हाँ, कितने लोगों ने अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करी है, स्वाध्याय किया है। तो इफ यू हैव लुक्ड इनटू दैट इन योर अंतर्करण में आप देखोगे तो क्या होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार बोलते हैं हम लोग। तो बुद्धि में तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स में तो मैं बोल सकता हूँ ना, ओके लेट मी थिंक, नाउ आई कैन एक्चुअली थिंक। तो थॉट्स थोड़े से कंट्रोल में होते हैं। डू यू एवर से ओके लेट मी फील सम लिटिल एंगर राइट नाउ, या लेट मी फील a little upset right now? No, emotions come like a volcano or like a tsunami. You just get blown apart. Emotions आपको टाइम नहीं देते. In fact, you don't have an emotion. Emotion has you. Right? True. तो इमोशंस इतने आसान नहीं है, ये सबकॉन्शियस के डीपेस्ट लेयर्स में से निकल के आते हैं और एकदम सुनामी की तरह आते हैं। तो थॉट्स में फिर भी हम कुछ सोच सकते हैं, वी कैन क्रिएट ए नेगेटिव थॉट, वी कैन क्रिएट ए पॉजिटिव थॉट, वी हैव सम काइंड ऑफ ए कंट्रोल। तो ओवर थिंकिंग होती है, नॉन स्टॉप थॉट्स आते हैं, अलग बात है, बट वी स्टिल हैव सम कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द थॉट्स। इमोशंस वी हैव नो कॉन्शियस कंट्रोल। तभी रेज में हम किसी का सर फाड़ देते हैं, हाँ, दुख में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इतने आवेश में आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं अपने आप को कि क्या हो रहा है, राइट। तो व्हेन वी टॉक ऑफ बीइंग स्थित प्रज्ञ, इक्वानिमिटी, वी आर टॉकिंग ऑफ बीइंग बैलेंस्ड इन अवर थॉट्स, इमोशंस, our ego, and then looking at into our chit, memory, and then stabilizing that chit, एकाग्र चित्त होने के बाद ही आप सिद्ध प्रज्ञ होंगे। तो इट इज नॉट इजी जर्नी। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए जॉब ऑफ ए शीप, इट इज द जॉब ऑफ ए लायन। दैट इज व्हाट वेदांता सेज। ये आध्यात्मिक काम जो है, साधना जो है, ये बकरी का खेल नहीं है, ये शेरों के लिए है। So you need to be like a lion-hearted to move on this journey, right? Because there's a lot of work, lot of inside work. बाहर की दुनिया में वर्क नहीं करना, अंदर की दुनिया में काफी काम करना है। That is what is spirituality, right? Totally agree. Yeah. Sure. Yes, Aman. So is that okay with you, and or you have any? No, absolutely, sir. Thank you so much for the Perfect. clarity. Thank Very good. Let's acknowledge Aman ji and Jyoti ji for agreeing to it. Yes, Vijay ji, Devesh ji, anything you want to share? We are reaching the scheduled time, और ज्ञान हो चुका है, unless you have a question. No, sir, I am listening in. Sorry, I was in and out because
I have some commitments at the moment. Okay, that's fine. Perfectly fine. Thank you. Vijay ji, that's fine. And yes, Devesh ji, anything you want to share? गुड इवनिंग शशि सर Yeah. एंड एवरीबॉडी गुड इवनिंग Yes. सर वो ड्युअलिटी वाला प्रिंसिपल क्लियर है इट इज वेरी अंडरस्टूड कि पूरा का पूरा आउटर वर्ल्ड ड्युअलिटी में है ना और टू अपोजिट फोर्सेस को एग्जिस्ट करती हैं और वो बैलेंस में रहना ही सृष्टि के एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रीजन है ना so it is very clear absolutely Yeah, when we say the outside world also includes our body and mind, huh? Just Yes, make a sir. note of it. बाहर की दुनिया में वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति हैं, साथ में हमारा मन और हमारा शरीर भी है, वो भी आउटसाइड वर्ल्ड में ही है. Only thing, I the soul am away from that. Yes. very तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भी मैं परे हूँ, मैं इस शरीर से भी परे हूँ. शरीर स्थूल शरीर है और मन जो है वो मेरा सूक्ष्म शरीर है, और मैं इन दोनों से परे हूँ. जब ये यहाँ इस सत्य को जब हम समझ लेते हैं और इसमें स्थित हो जाते हैं, then there is a possibility or a space from which you can attain freedom. Correct? Very good, Devesh. Yeah, good understanding. Yes, anybody else who wants to share or ask anything before we reach the closing time? 5 minutes more. Anybody who wants to share? Okay, let's summarize then. What are we taking away from the session? We have done this session in continuation with the last week. तो 2 हफ्ते का ज्ञान है इसमें, तो क्या लेके जा रहे हैं? How much you think you have got some insights which can transform your life? So if you want to share that, please go ahead. अनीता जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपने बारे में या इस सेशन के बारे में, तो you can go ahead. Yes. Lavita ji, you haven't shared anything today, so you attended the last session. Anything you want to share, please go ahead. And Amit ji is here, your host is here. You want to share something? Yeah. Hi sir, अभी कुछ शेयर नहीं करना because मैं भी कहीं पे हूँ and I'm just listening अभी. Okay, that's fine, no problem. So thank you for your commitment. That though you are busy, you are still there, and yeah, do watch the recording again. And in case you have anything to share, you can do that one-to-one, or you can share that with your host. Yeah. All right. So nothing more to add. Then we can close the session. Amit ji, anything for you? Done? Okay. Right. So since it is a continuation of the session, I don't think people have much to share. A lot of wisdom here. Watch the recording. Yes, Amit ji, go ahead. I was thinking if people want to suggest कोई टॉपिक अगर वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ चुन के हम सजेस्ट करना चाहें जिसपे कुछ डिस्कशन या चर्चा आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो yes, we have a couple of minutes. We can take on that. Yeah. So we are completing the series of the universal laws. Yeah, we have completed that now. So next week onwards, we will be starting a new series. So any suggestions, if you have, you can suggest that. So we will consider that while we discuss the topic, or we finalize the topic from next week. Though I would prefer that as a series. So anybody who has any suggestion, you can suggest me later also. But right now, if you want to discuss anything, you can share that. We will consider it. I just want to ask one thing. Go ahead. जी, कि जैसे अभी सेशन अटेंड किया, सब कुछ समझ आया, लेकिन वो रिटेन नहीं हो पाता. अगर उसके नोट्स बने हैं, उसमें नोट्स में जाओ और उसको रीड करो, वो करता नहीं है कोई ज्यादा. तो तो अगर उसमें जाओ तो मतलब व्हेन यू गो डीप इनटू इट, तो सारी चीजें याद आने लग जाती हैं. लेकिन इफ यू डोंट आपने उसको मतलब वो दिमाग में नहीं, वो पूरा फुल एक कंप्यूटर की तरह रजिस्टर होता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या मतलब व्हाट इज द formula? So like in our scriptures it is said that for any sadhak, there are 3 steps that a sadhak should follow. The first is listening, which is happening. The first step यहाँ पे हो रहा है, आपके पास recording भी available है, so you can listen to that again also, right? The first step is always listening. श्रवण बोलते हैं इसे. दूसरा होता है मनन, contemplate on it.
contemplate on it. Okay, this is the truth. What is the truth? Catch hold of that. So sometimes you will have a story by which you can catch on to the truth. Sometimes you will have an incident by which you will catch on to the truth. So get hold of the truth and replace that with all the beliefs that you have. आपके जितने भी बिलीव्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, उन सबको रिप्लेस कर दीजिए स्पिरिचुअल ट्रुथ से. यस, दैट इज द सेकंड. थर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन. स्वाध्याय करिए और देखिए मेरी लाइफ में कहाँ ये अप्लाई हो रहा है. जैसे आज हम बात कर रहे हैं ड्युअलिटी की. मैं आपको बॉटल्स दे देती हूँ, 4-5 बॉटल्स. आज हम बात कर रहे हैं ड्युअलिटी की. सो लुक इनटू योर लाइफ वेयर यू हैव सफरिंग एंड मिजरी एंड आइडेंटिफाई द ड्युअलिटी. और जब उस ड्युअलिटी को आप बिल्कुल पारदर्शित होकर देख लेंगे ना, यू विल बी फ्री. सो अप्लाई दैट इन योर लाइफ. ओनली 3 स्टेप्स: लिसन, अंडरस्टैंड, अप्लाई. और नहीं हो रहा है, यू आर ऑलवेज फ्री टू टॉक टू मी 1-to-1 एंड आई कैन throw some insights for you, है ना. And let's also hear what Amitji is trying to share. Yes, Amitji, go ahead. So this is definitely a good strategic level answer. But ज्योति जी, अगर practical transactional level पे अगर बात करें कि कैसे मिनट में रिमाइंड करें, तो जो 2-3 चीजें जो मैंने यूज करी हैं, which I think I repeated some time back as well. 3 चीजें करते हैं, मैं करता हूँ. वन इज अपने आप को ऐसी चीजों से सराउंड कर लें जो इस तरह का रिमाइंडर देते रहे जो भी हमारे लिए स्पिरिचुअल ज्ञान है. Now, for example, एक चीज है स्पिरिचुअल सिंबल्स. जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था, यिन एंड यांग का एक सिंबल होता है, अमेजोन पे, ऑनलाइन या हर जगह मिल जाता है मार्केट में. इसी तरह से अगर हम वेबसाइट्स पे देखें तो करीब 30-35 स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं जिनके खाली विजुअल्स आपको मिल सकते हैं फ्रॉम एनी मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेस. सो इनको आसपास लगा ले. यिन यांग, शिवा शक्ति, पीस का एक साइन होता है, श्री यंत्रा होता है, और बहुत सारे होते हैं. अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे आपको 35 तो मिल जाएंगे. नंबर 2, अपनी डीपीज जो होती है, हमारे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्टोरीज, मिलू के सारे हम डीपी भी देखते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं. तो उनमें भी इस तरह के स्पिरिचुअल कोड्स लगा लें. वॉलपेपर, कंप्यूटर का, मोबाइल का वॉलपेपर फॉर एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल कोड लगा ले ताकि जब भी आप उसको देखें वो एक रिमाइंडर की तरह आपको पढ़ना या देखना ही पड़े, फॉर एग्जाम्पल. और तीसरी चीज मैंने करा, कुछ मैंने पासवर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को ओपन का पासवर्ड, कुछ ऐसे रख लें जो हमारे को किसी स्पिरिचुअल ज्ञान की याद दिलाएं. फॉर एग्जांपल सर को पता है और 1-2 शायद दोस्तों को यहाँ पे, कि एक हम सबको पता है ज्ञान है, WHHFG बोलता हूँ जिसको मैं, विच इज वट एवर हैपन्स फॉर गुड. ठीक है, इसके पीछे डीप डिस्कशंस हो चुके हैं हमारे. हमको पता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बाद में पता लगता है कि वो क्यों हुआ था. ठीक, वो डिस्कशन नहीं करेंगे, पर उसका शॉर्ट फॉर्म बना WHHFG. अब मेरी 1-2 फाइल्स का नाम मैंने पासवर्ड डाल लिया, तो एवरी टाइम मैंने वाज एंटरिंग इट एंड आई वाज क्वेश्चनिंग मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, तो ये रिमाइंडर एवरी डे आ गया, ट्वाइस थ्राइस इन अ डे समटाइम्स. तो ये 3 चीजें कर सकते हैं अपने आप को विजुअल से. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस. दूसरा पासवर्ड्स, तीसरा डीपीज, विजुअल्स बहुत सारे होते हैं. आई थिंक अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी अब लगा लेंगे 4-5, तो 24 घंटे आप उसको देख पाएंगे शायद. और डीपी तो फॉर श्योर वीकेंड्स पे, फेसबुक, इंस्टा. Absolutely. Perfect. Thank you so much. Very good, Thank you Amitji. so much. And Lavita ji has said that if you can share this in the group, so in case you have any pictures or anything that you want to share about these symbols, so you can put that in the group so people can benefit from that. Yes. All right, very good. So that takes care of Lavita ji and Jyoti ji and Amit ji's sharing. Yes. And of course, the least you should do is attend the sessions every week and share these recordings with people in your life and invite people here. That is another way where you can keep this alive. Because see, if you have 100 people in your life and if everybody is talking the same language, it will be good for you to interact with them, right? अगर सब अपने अपने आध्यात्मिक लेवल पे अपनी उन्नति करें और अपने चेतना के स्तर को ऊंचा उठाएं, आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं? Yeah. So when you are moving forward in the spiritual journey, ensure that other people in your life are also doing that. And Jyoti ji has been doing that very powerfully. So all of us need to do that, especially with your partners. So get your partners here. They will have some wisdom bites. They will have some transformation. And they will know what exactly you are doing here 9 to 10 every week. And these are free sessions. So कंजूसी मत करिए.
अटेंड करिए, लोगों को इनवाइट करिए और उसको शेयर करिए लोगों के साथ, एंड लेट्स क्रिएट लव, पीस एंड जॉय इन अवर लाइफ, राइट? One Yes, last Amit ji, thing. go ahead. One last thing, sorry. Yeah. I think the biggest role and the easiest task that we can have is to spread anything around consciousness as much as possible. हम खुद कभी आ पाए ना आ पाए, हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं कितना नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने फ्लॉज हैं, टेक्निकल फ्लॉज होते हैं सेशन में या हमारे बोलने में, कुछ भी, बट हम बेयर मिनिमम जो कर सकते हैं, जो हमारी कर्मा काटने के लिए भी हाईएस्ट रोल है इस ह्यूमन मशीन में रहने का, कि कॉन्शियसली जितना जहां जहां पे सीडिंग क्रिएट कर पाए, किसी को पसंद आए नहीं आए कोई बात नहीं, आई थिंक इट जस्ट डज नॉट मैटर, दिस इज स्मॉलेस्ट बट स्टिल द ग्रैंड मोस्ट एक्ट टू स्प्रेड विजडम. गीता में भी लिखा है ज्ञानदान सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है. वैसे भी स्पिरिचुअल दान, स्पिरिचुअल ज्ञान का, you know, when you're sharing that with people, that is the highest level of dan you can do, है ना? So go ahead and contribute to people in your life, right? Okay, so now schedule time is over, so we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. I Thank you hope so you much. enjoyed the session. Enjoy your life and Thank come you, sir. back to attend the next Wednesday sessions. We will soon have a new series starting. Until then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, good night, I am bye. Brahmasmi. Thank you. Thank Aham you. Brahmasmi. Thank you, bye.